मैं डॉक्टर गुलाब फलारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जे कॉलेज आरा। आज का मेरा लेक्चर का टॉपिक है रिग्रेशन कंसेप्ट, अर्थात रिग्रेशन को हिंदी में प्रतीकगमन कहते हैं। तो इसकी अवधारणा, प्रतीकगमन की अवधारणा, यूजेज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन इक्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में जानिए कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म रिग्रेशन इज गोइंग बैक और रिटर्निंग। अर्थात इसका डिक्शनरी मीनिंग जो है वह गोइंग बैक, पीछे की ओर जाना या लौटना है। द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रांसिस गैल्टन in his paper Family Likeness in Stature in 1886। सबसे पहले इस कंसेप्ट को फ्रांसिस गैल्टन ने 1886 ईस्वी में अपना एक पेपर फैमिली लाइकनेस इन स्टेचर में इसके बारे में स्टडी किया था। गैल्टन कैरीड आउट ए स्टडी to find out whether tall parents always have tall children। बहुत महत्वपूर्ण है कि टॉल फादर जो है, लंबे पिता या पेरेंट्स के बेटे जो है वह टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। एंड शॉर्ट पेरेंट्स always have short children। जिसका हाइट छोटा होता है उसके चाइल्ड भी छोटे होते हैं। And he found that there was a tendency for the average height of both tall and short children to reach the average height of the parents, or better to say entire population। यही रिग्रेशन का मीनिंग है, यही कंसेप्ट है। एंड कार्बियर्सन एंड ली established that average height of sons of tall fathers tended to go down। एवरेज हाइट जो उसका होता है चाइल्ड का, वह नीचे की ओर घटने लगता है। And that of the sons of short father tended to go up, vis होते हैं। The average height of the population का इसी कंसेप्ट के आधार पर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। अब इस कंसेप्ट को जानने के बाद अब रिग्रेशन जो है, it is a statistical technique, एक सांख्यिकी तकनीक है, used to quantify the relationship between economic variables। जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उसमें उसके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करने का यह एक तकनीक है। and it is used to measure the stochastic relationship। Here the word is stochastic relationship। बाद में हम इसको क्लियर करते हैं। Between the two or more variables having cause and effect relationship के बारे में स्टडी करता है। And it measures an approximate का मेजरमेंट होता है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। इसीलिए यह टर्म यह स्टोकेस्टिक रिलेशनशिप का टर्म यूज किया गया है। एंड इट मेजर एन approximate value of the dependent variable in response to a change in the independent
variable of a function. Again, the independent variable is denoted by x. जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम x के द्वारा दिखलाते हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय y. और जब यह स्थिति होती है, इट इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, इसे कहते हैं. The term linear means that an equation of a straight line of the form y equal to a plus bx. Linearity का यह मीनिंग है. When we plot two variables, say that is x and y, on a scatter diagram and draw two lines of best fit which pass through the plotted points, these lines are called regression line. उसे हम regression line कहते हैं. And these regression lines are based on two equations called regression equation. दो तरह के regression equations होते हैं. Regression equations are algebraic expression of the regression line. यह केवल उसका एक algebraic expression है regression line का. And since there are two regression line, क्योंकि दो regression line होते हैं, अतः there are two regression equations also. तो दो regression equation भी होते हैं. Regression equation of x on y line and regression equation of y on x line. Now regression equation of x on y is denoted by x equal to a plus by. Here a is the intercept. Better to say a and b both are constant, but a is called intercept and b is called slope of regression line. इसी तरह regression equation of y on x line is y equal to a plus bx. अब यूजेज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स. जितने भी वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक डिसिप्लिन मीन्स हेयर सब्जेक्ट हेयर, है ना, वहां पर इसका प्रयोग होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑल फिजिकल एंड सोशल स्टडीज में सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है. एंड द रिग्रेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग. फर्स्ट, it provides estimates of value of the dependent variable from the value of the independent variable. Estimation का. Second goal of regression analysis is to obtain a measure of the error. Here error is most important. Error, क्योंकि जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे वो अप्रॉक्स में करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में नहीं करेंगे, वो होता ही नहीं है, इसलिए एरर आएंगे. इन्वॉल्व विद यूजिंग द रिग्रेशन लाइन एज ए बेसिस फॉर एस्टिमेशन. एंड फॉर दिस स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड. इसके लिए, इसका टेस्टिंग करने के लिए हम रिग्रेशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट का कैलकुलेशन करते हैं. एंड इफ द लाइन फिट्स द डाटा क्लोजली, अगर डाटा क्लोजली फिट होता है तब गुड एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द वेरिएबल. तो एस्टिमेशन जो है वह गुड होगा. Next, with the help of regression coefficient, we can calculate
कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑल्सो के द्वारा भी हम उसकी माप कर सकते हैं। एंड द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर स्क्वायर is called coefficient of determination। इसे coefficient of determination का measure the degree of R between two variables। Again, the greater the value of R square, the better is the fit। जो लाइन हम फिट करेंगे वह बेटर होगा। एंड व्हेन देयर इज आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, से इट इज आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन पॉजिटिव सेंस एंड इन नेगेटिव सेंस, द टू रिग्रेशन लाइंस विल कोइंसाइड। जो दो रिग्रेशन लाइन होंगे वह कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा। एंड इन दैट केस वी हैव ओनली वन रिग्रेशन लाइन। ऐसी स्थिति में केवल एक रिग्रेशन लाइन होंगे। अब सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस का कैलकुलेशन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के द्वारा कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है। नाउ वी कैन ऑब्टेन बोथ द टू रिग्रेशन इक्वेशन by the method of least square from the given values, and given values is x 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and y is given as 9 8 10 12 11 13 14 16 15. Now plot this data in a tabular form to get the necessary values for least square method. Now x, given x here is 1 2 3 4 9. Find here sigma x. Sigma x equal to here is 45. Now y is given as 9 8 10 12 11 13 14 16 15. Now find also sigma y. Now sigma y equal to 108. Multiply this x and y, xy, 9, 16, 30, and so on. To get here sigma xy, that is 597, totaling this. X square here is 1 4 9 and so on. To add these values, sigma x square 285, y square 81, 64, and this value we can find here sigma y square equal to 1356. Now for the sake of simplicity here, we put the equation sigma x equal to 45, sigma y equal to 108, sigma xy
597 sigma x square 285 sigma y square 1356. Regression equation of x on y. Regression equation of y on x. The formula for calculating regression by least square method is sigma x equal to na plus b sigma y, equation first, sigma xy equal to a sigma y plus b sigma y square, equation second. Now put this value here, sigma x equal to 45 given at 9 a plus sigma y 108 y sigma xy 597 equal to sigma y 108 plus 1356b. Now solve this equation. Multiply this equation first by 12 and then deduct in equation second. We get 597 equal to 108 a plus 1356b, 540 equal to 108 a plus 1296b. After reduction, we get 57 equal to 60b. So b equal to 57 by 60 equal to 0.95. Now putting these values b in equation first, we get the value of a in equation first, 45 equal to 9a plus 108 into 0.95, then a equal to minus 6.4. Now regression equation of x on y line is x equal to a plus by equal to plus 0.95y. Similarly, we can obtain the regression equation of y on x line by applying the formula sigma y equal to na plus b sigma x, equation first, sigma xy equal to a sigma x plus b sigma x square. We plot this in this formula, second equation, 108 equal to 9a
plus 45b, equation first, 597 equal to 45a plus 285b, equation second. Now multiply equation first by 5. We get here 597 45a plus 285b, sorry, 540 equal to 45a plus 225b after reduction. 57 equal to 60b. So b equal to 57 divided by 60 equal to 0.95. Now this value can be obtained in equation first. To get the value of a, so a equal to 7.25. Similarly, regression equation of y on x line may be written as y equal to a plus bx equal to 7.25 plus 0.95x. So by the method of least square, we can find both the regression equation of x on y line and y on x line. That's it.